Well, my co-host is Sana Mir. Sana, very good evening to you. Thank you. Good evening to you too. In whichever language you prefer. I think I'll be bilingual today. Absolutely. Well, we're all kind of bilingual. To my right, Akib Javed has changed sides from that side, the Urdu side, to the English side. Improved, man. Good boy. This is a reward for some very, very fine work. It is. Nothing against these guys, of course. With Richard, Saviv is back again, looking as suave as ever. Good to see you. Very nice to have you with us. And to our left, Azam Mahmood, welcome again. Thank you very much, sir. Rashid Latif, Good evening, sir. very good evening to you, sir. Umar Gul, very good evening to you as well. Good evening, sir. Now, we have, well, let's say we have a pretty full panel. We have just the one game to look at today. So let's just remind you what we've seen today. The game between Australia and Sri Lanka in Dubai. And these were the figures at the end of the day. Sri Lanka put into bat first, 154 for 6, a sparkling start. They were racing away in those first 6 overs, but got pegged back. Australia then, in the end, again, a very quick start. They had plenty of time to spare at the end of the day. 17 overs, that's all they needed. So their net run rate, of course, will go up as well. But comfortable winners by 7 wickets. And the most encouraging thing for Australia would have been the form of that opening partnership. Warner 65, Finch 37. Both of them failed in the first game of this tournament. So they will be much happier, both as an opening batsman and in Finch's case as a captain. And the job is done. So Australia take the points. In fact, if we look at the points table as well quickly, if we can just do that now, just to establish where this gets these two teams in this group. If you just check out the points table, England on top with 4, Australia comes second, so both have played 2 matches, both have won 2 matches now, 4 points each. Run rate, of course, at this stage is still developing, but England's is very, very good at 3.61, Australia 0.73. And so the catch-up is, of course, vital for people like South Africa, Sri Lanka. Bangladesh and West Indies, you can probably say, Viv, I'm afraid, are, what's the word for it? The polite word for it, I think, is struggling. Definitely. And especially if you would have played that badly, you have every right to be in the position that you are now. Let's leave the West Indies out of this. Today was all about Australia and Sri Lanka. Now, at the start of the day, this is all about one side putting themselves in a position on the points table to give themselves a real springboard towards the semi-final. So Australia have done that. Yeah, no surprise in this group. Quality-wise, preparation-wise, Australia, England always looked organized teams. The third team which impressed me is Sri Lanka. Yeah. Just imagine the new team, new group, and if somebody hold this group for another 2 years, they have everything to become a top team. Quality spin options, 2 pace bowlers, and they have good all-rounders, and I can see skillful batting. First 10 overs, they were almost cruising. Then, of course, the experience and the class which Aussies has, real pace and spin. I think whoever is behind this planning is perfect. Mickey Arthur, I suppose. Yes, Mickey Arthur. And if you compare Sri Lankan progress and comparing with the West Indies average age would be 38 or 7 or something like that. Could be 40. Could be 40. So they can't move up from this, isn't it? So Sri Lanka is policies and the organization. I liked it. So I think a fair game. Aussie deserves this win, isn't it? Yeah. Sticking with Sri Lanka, Viv, this youth policy, it's the thing about watching world cricket is that quietly people come up without you really noticing until you put them on a world stage like this. Some of that stroke play at the start in those first 6-7 overs was extraordinary. I'm very disappointed in the end to see that it only got to 150 whatever. But the way in which they started, it looks like it was going to be a total of maybe 170, 180. And that, I think, would have given them a reasonable chance for them to compete against a very powerful Australian team, especially when you look at the lineup for the Australian team and its batting unit. It's very special. And as you can see today, I know the Aussies would be quite pleased to see someone like maybe a David Warner come into form. And gradually Stoinis got into
a bit of got plenty others as well. You have Finchy, who at the top of the order, and I guess it's always nice to just creep your way into things. You cannot afford to peak too early, and certainly they are in a good place. Yeah. Right, Sana, over to you to question your very good boys on the left. See what they feel about this game between Australia and Sri Lanka. तो मैं मेरे ख्याल से राशिद भाई आपसे शुरू करना चाहूँगी कि जो श्रीलंका की पहले भी बात हुई, ऊपर से बैटर्स ने अच्छा खेला, 78 for 2 था, 78 पे एक ही खिलाड़ी आउट था. मिडिल ओवर्स में 7 से 15 ओवर्स तक 52 रन्स बने और 4 विकेट्स गिरी. इस मिडिल ओवर में आपको लगता है बैटिंग अच्छी नहीं हुई या बॉलिंग बहुत अच्छी थी? मेरे ख्याल से मिचेल स्टार्क को जब लेके आए, ये 11th ओवर एंड 13th ओवर शायद किया है, जिसमें कुशल परेरा को आउट किया और हथारंगा को आउट किया है इन्होंने, तो वहाँ पे टर्निंग पॉइंट था. यहाँ पे ये जा रहे थे, तकरीबन 12 ओवर में 85-86 रन हो गए थे. इसका लग रहा था 170 प्लस रन बनने चाहिए थे, लेकिन वो जो स्पेल लगाए यहाँ पे 2 विकेट्स लिए हैं इसने. और जो बोल्ड किया यॉर्कर के ऊपर, वो बहुत ही, उससे पहले वाली बॉल क्रॉस सीम की थी उन्होंने और वो नज़र आई और उन्होंने मारी, लेकिन अगली बॉल सीम पकड़ के जब की है उन्होंने, स्विंग हुई है और गेंद डिप हुई है, नीचे स्टंप पे जाके लगी है. उसके बाद वाली बॉल भी जो अगले ओवर में की उन्होंने, उसको भी बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ किया. इन कंडीशन में बॉल कैरी कर रही थी, क्योंकि फास्टेस्ट बॉलर हैं वर्ल्ड के, वो कैरी करे. नो डाउट जम्पा ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है, इसमें कोई नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैच को जो चेंज किया है इन ऑस्ट्रेलियन फेवर, वो मिचेल स्टार्क ने किया है. तो मिचेल स्टार्क की बॉलिंग को आप समझते हैं कि ज़्यादा इम्प्रेसिव थी? नहीं, बैटर ने उनकी भी थी, हाँ. इतनी गलतियाँ, क्योंकि वीक लिंक ऑस्ट्रेलिया का वीक लिंक बहुत ज़्यादा है. स्टॉइनस ने 3 ओवर के 35 रन दिए, 16 रन दिए हैं मैक्सवेल ने 51 रन इन 4 ओवर. तो ये वीक लिंक है इनका अगेंस्ट टॉप एशियन टीम लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान. आज 2 लेफ्टी थे, अजहर भाई और मैक्सवेल से स्टार्ट किया उन्होंने, लेकिन पहले ही ओवर में 16 रन आ गए. उसके बाद की कप्तानी कैसी लगी आपको? आई थिंक उनकी अगर आप कप्तानी देखें तो प्लान था 2 लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट, और हमने देखा जैसे पहले भी मैच मैक्सवेल ने नया बॉल किया था और उसने बड़ा अच्छा किया. उसका एक्सपीरियंस भी है, IPL में भी वो नया बॉल करता रहा है. तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड क्लास साइड है, तो जाहिर सी बात है कि उनके वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं जैसे हेजलवुड, कमिंग्स एंड मिचेल स्टार्क और जम्पा. आई थिंक कि वो इतना आसानी से आप रन नहीं बना सकते. और यहाँ पे जो है ना, पावर प्ले में जिस वक्त आप करते हो तो आप एडवांटेज लेते हो, नया बॉल है. आई थिंक कि बेस्ट कंडीशन होती है जब पहले 6 ओवर में आप पावर प्ले में रन्स करते हो. जितने ज़्यादा रन्स बनाते हो दैन बॉल जो है ना थोड़ा ग्रिप होना शुरू हो जाता है, दैन स्पिनर कम इनटू प्ले, तो वो थोड़ा सा जो है ना बैट्समैनों के लिए मुश्किल हो जाता है रन बनाना. जितनी भी टीम की प्लानिंग होगी वो आई थिंक कि फर्स्ट 6 ओवर में वो ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे. जैसे परेरा हैं, वो हमें पता है कि वो जे सूर्या की तरह खेलते हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा शॉट्स हैं. और आई एम रियली इम्प्रेस विद श्रीलंका, जिस तरह इन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह की बैटिंग की है. ही इज़ अ स्किलफुल यंग प्लेयर एंड उसके पास लॉट्स ऑफ शॉट्स, यू नो लाइक उनके पास स्किल्स भी हैं और गैप बड़ा अच्छा वो क्रिएट करते हैं. तो आई थिंक कि मैं वही कहूँगा कि अगर 78 पे 2 थे, 94 फॉर 4 विकेटें उनकी गिरी हैं उस पर. वहाँ पे आके जब आप T20 फॉर्मेट में उसी वक्त आप दूसरी टीम को कंट्रोल कर सकते हैं जब आप उनकी विकेटें लेते हैं. अगर बैट्समैन सेट हैं तो बड़ा मुश्किल होता है कि कंट्रोल रन रेट को कंट्रोल करना. आई थिंक वहाँ पे उनका रन रेट नीचे आया है, जो प्रेशर पड़ा है, फिर उस तरह का फिनिश नहीं हुआ. फिर मिचेल स्टार्क का जिस तरह की राशिद भाई ने बात की, और जम्पा 4 ओवर में उन्होंने 12 रन दिए हैं और 2 आउट किए हैं और क्रूशल टाइम पे वो आउट किए हैं. So before I go to Umar Gul, what Rashid and Azhar are mentioning here is the bowling of Mitchell Starc, how he came into the middle and in that 1 over got 2 wickets and pulled the match back into Australia's grip a bit more. Just go back to Umar and give it to you. So Umar bhai, आप मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा impressive इनके लाइनअप में कौन आपको लगा है जो ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग, अभी हम पहले अगर इन्हीं की बात करें? देखिए, अगर मैच से पहले हमने कुछ स्टेट वगैरह देखे, जिस तरह बिफोर द मैच श्रीलंका और उनकी ऑस्ट्रेलियन टीम की कंपैरिजन हो रही थी बिफोर द मैच, तो श्रीलंका को काफ़ी अच्छा वो रेट कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह कन्विंसिंगली उन्होंने लास्ट मैच में चेस किया अगेंस्ट बांग्लादेश, और फिर जिस तरह दूसरी टीमों को पहले बॉलिंग में रिस्ट्रिक्ट किया, तो वो बड़े ज़बरदस्त एक शेप में लग रहे थे. लेकिन आज जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने कम बैक किया है, स्पेशली फर्स्ट पावर प्ले के बाद जिस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया था 53
for one और जिस तरह असलंका और कुशाल परेरा खेल रहे थे, तो मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक तो ये कि आज अगर आपने देखा होगा तो उन्होंने स्पिनर के साथ स्टार्ट नहीं किया, इवन दो दे वर प्लेइंग विद 2 लेफ्टीज, लेकिन उन्होंने अपने फास्ट बॉलर को प्रेफर किया क्योंकि विकेट में थोड़ा सा वो था, बॉल निकल रहा था, उस पर ग्रिप उस तरह नहीं हो रहा था जिस तरह अबू धाबी में बॉल ग्रिप हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि पहले पेसर से किए, जो कि ऑल दो परेरा बड़ा अच्छा उसको कह रहा, मैक्सवेल को ट्राई किया लेकिन उसको रन्स पड़ गए। लेकिन जो पावर प्ले के बाद जिस तरह जैम्पा ने बॉलिंग किए, अपने वेरिएशन किए, बिल्कुल वो टोटली दूसरे स्पिनर से आज थोड़ा डिफरेंट लगा क्योंकि वो वेरिएशन के साथ बॉल कर रहा था। मेनली वो अपने लेग ब्रेक पे रिलाई कर रहा था और पेस को यूज़ कर रहा था, तो उसकी वजह से उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। और फिर जिस तरह राशिद भाई ने कहा कि जो स्टार्क जो सेकंड स्पेल था और जो 2 आउट किए, तो मेरे ख्याल से वो टर्निंग पॉइंट था श्रीलंका के लिए कि वो उन्होंने वहाँ से पुल बैक किया श्रीलंकन साइड को, और एक टाइम प्लेयर के 170-80 हो जाएगा, जो कि विकेट था उसका 170 वाला स्कोर वाला था। लेकिन आई थिंक क्रेडिट गोज टू बॉलर जिस तरह उन्होंने वापस किया, और फिर जिस तरह अटैक किया ऑस्ट्रेलियन बॉलर ने, तो उन्होंने बिल्कुल भी किसी भी बॉलर को सेट नहीं, उन्होंने ऑल्दो उनका जो सबसे ज़्यादा वो रेट हो रहा था तिक्षाना, उसको स्पेशली अटैक किया क्योंकि वो एक मिस्ट्री बॉलर था और उन्होंने प्रेफर किया कि यार इनके जो बेस्ट बॉलर उसको अटैक करें। तो मेरे ख्याल से बड़ा एक तो मैच बड़ा ज़बरदस्त हुआ, मज़ा आया देखने का। So he's saying that Sri Lanka came into the match more favourite because the way they were winning the 4 matches, but Australia really got a very big turnover after the power play, because after the power play in the middle overs, it was the bowlers Stark and Adam Zampa with their variations and Yorkers. A very, very good summary, because that sparkling start seemed to be going Sri Lanka's way for the first 6 overs, almost 10 overs actually, and then those wickets that the guys have been talking about certainly pegged it back, and this kept the game under control for Australia. If we look at the way the Sri Lankan wickets went down, this will in its own way tell the story. First of all, straight up in the air, and the catching by and large in this tournament has been very good. That was relatively straightforward. Cummins doing the first bit of damage. Then the sweep shot, gentlemen, the sweep shot started to come into play, and not quite out the middle. Well, most time, this is a delivery that I think most of the commentators were speaking about. Look at the slug to the leg, and for some reason by the top edge. And he's not going to drop that, Steve Smith. No movement of the feet again, as you can see, just standing and having a go. Here we go again. And I guess when you have someone like maybe a Mitchell Stark coming in, he's world class. You know, so some of the deliveries that he bowled, and I can remember it's one of the commentators saying things like the Yorker that he bowled to the batter, he said that could be the ball of the tournament. I don't think they did see Shahid bowl that delivery, Afridi, that he bowled as well. I think that would be also contested in terms Well, of... I think by the time you work it out, if you go through 3 or 4 weeks of a tournament, That's right. there are going to be 1 or 2 more candidates for... That's right. And the ballers, I mean, Trumperman the other day for... Yeah, that was for beautiful. Namibia, there some cracking deliveries there. I mean, the great thing about someone like Mitchell Stark, though, surely is this. If he strikes early, you get off to a great start. If he's able to come back in the middle and peg it back, I mean, that's almost as valuable. Yeah, he's a wicket taker. So he's the one captain used to take wickets. And sometimes when he comes around the stumps and moves away at the times, that is the most difficult angle for any batsman. So he's the one who there to look for wickets all the time. And then Zampa today was outstanding, being a Sri Lankan team, but this is what happening on UAE wickets. First 10 overs, hard ball, skidding through a little bit, and the challenge starts after 10 overs. When it started, gripping, the ball gets softer. That's the management that batsman has to tackle. But this tactic of going around the wicket, the left arm around the wicket, is something that, a name that I think you'll recognise, Wasim Akram did an awful lot as well, but able to swing it Especially both the ways. 92. He was the Any king. year, to be honest, any year, but 92, you're right. delivery. Yeah. He was the king. LLM delivery. The king. Are we talking World Cups that England lost? Yes, we are. Okay. Yeah. But no, I mean, you're right. I mean, Wasim, both in that World Cup in 92,
Yes. And in Test cricket, of course, outstanding, using the angle, using the ball that was, Yeah, especially the older balls. I think he was one of the best left-arm seamer I ever seen. And like we're talking about Mitchell Stark here, you know, like he has the ability to take wickets, and he is world class. And captain used him for take wickets. My turn is in Urdu. Sorry, guys. Can I tell you a little secret? Yes, sir. About Wasim? I'm so glad when he came, right, I was looking to retire. And I'm so glad that I retired that time because he was special, man. Yeah, He's one guy that you could not really get a hold on. Comes around that wicket and he gets the ball to just straighten. It's amazing. I think he's a class act, man. And to be fair, all the other lefties that you would have seen now, what you're seeing they're doing is a pattern from what Wasim would have achieved. Well, do you want to check with the guys? And because you always give so much credit to other players, that's why you're so well respected. I was fairly good at what I do, but there's some guys, you know, who sometimes can get you undone as well. And he's one of those individuals that I have, if there's anything like 150% in terms of what he brings, that's it. And sometimes when he's bowling around the stumps, he runs behind the umpire. ये मेरा काम है. Okay. देखा क्या होता है रिवर्स स्विंग को छुपाने के लिए, तो कि ज़्यादा देर तक बैट्समैन को नज़र ना आए बॉल, तो वसीम भाई आते थे एम्पायर के पीछे से और एकदम से सामने आके बॉल को डिलीवर करते थे. टाइम नहीं मिलता था बैट्समैन को, बैटर को, कि वो इन स्विंग है, ये स्पेशली रिवर्स स्विंग में राउंड दैट स्टंप जब आते थे तो बॉल को हाइड करते थे. जब एम्पायर के पास से निकलते थे सामने बैट्समैन होता था, बैट्समैन को लेट हो जाता था और मुझे देखना पड़ता था कि रिवर्स है या ये इन स्विंग है या आउट स्विंग है, क्योंकि टोटली कीपिंग रिवर्स स्विंग में डिपेंड करती है कि आपको बॉल का पता होना चाहिए कि बैट्समैन के ये इन स्विंग आएगी या आउट स्विंग. और मेरी पोजीशन वैसी होगी, अगर आउट स्विंग है तो मैं अपनी पोजीशन फर्स्ट स्लिप की तरफ कर लेता हूँ कि वहाँ पे कैच आएगा तो वहाँ पे जाऊँगा. अगर इन स्विंग टांग से जाएगी तो मुझे यहाँ मूव करना पड़ेगा. तो इससे अच्छा बॉलर मैंने नहीं देखा. मैं लकी हूँ, वसीम अकरम हो, वकार, यूनुस, शोएब अख्तर, लोगों ने टीवी पे देखा, मैं उनके सामने से कीपिंग की है. तो वो मेरे लाइफ की जो ग्रेटेस्ट मोमेंट है ये इन तीनों बॉलर के. और भी है, आकिब की स्विंग है, लेकिन रिवर्स स्विंग अगर देखे जाए तो इन तीनों से बेहतर नहीं था कोई भी. I'm sure we could talk about Wasim for a long, long time, but there are people here saying we need to take a break. So Okay. hold that thought. Hold that thought. We'll be right back with you. Quick break and more from Game on Hay. And welcome back again to Game on Hay. We're discussing today's match between Australia and Sri Lanka. One, of course. नहीं, द वे जिस तरह उसने नए बॉल के साथ स्टार्ट किया है, अर्ली ऑन उसने स्विंग करने की चांस लिया और ऑल्दो उसको स्विंग मिला भी है, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि स्टार्क जिस तरह ही यूज्ड टू रन फास्ट एंड स्मूथ, मुझे थोड़ा सा अभी भी या तो इसका रिदम का मुझे कुछ फ़र्क लगा या कोई इंजरी वगैरह कि आज भी वो सुबह जब दिखाते इसकी कोई नी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आई स्टिल मेरे ख्याल से इसका वो रिदम उस तरह नहीं लग रहा जिस तरह ही यूज्ड टू रन फास्ट एंड स्मूथ. लेकिन स्टिल उसकी बॉलिंग एक्सपीरियंस पेस अभी भी उस तरह है, लेकिन मे बी आगे जाके उसकी जो भी प्रॉब्लम है रिदम का या इंजरी का, आई होप कि वो ठीक हो जाए. और जिस तरह हम एक स्टार को देखते थे, वन ऑफ माई फेवरेट बॉलर, तो आई थिंक एक तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़बरदस्त होगा, फिर दूसरा ये कि उसके फ़ैन भी चाहते हैं कि जिस तरह वो दौड़ता था, तो ये चीज़ मेरे ख्याल से मैं ज़रा मिस कर रहा था आज के मैच में भी. So Umar is saying that he has been struggling with a few niggles. So even though that he has bowled really well, but he felt that the run-up missed that kind of rhythm and his bowling missed that rhythm. So what do you think? Okay, let's come to you then, because that one, that Yorker, didn't seem to lack rhythm. It didn't seem to lack pace. It didn't seem to lack direction. You know, sometimes fast bowlers can never be 100% fit. You always, you know, take one or two niggles, but still he is one of the best. Still bowling at 145, sometimes touched 150. The quality of Stark is like Wasim, Stark, left-armers. Even the Shaheen. The Shaheen is different. Haris Rao, Waka Yunus, slightly round arm, and when they deliver, they release the ball. It's not like this. Not seam up, Slinging right? it. Seam up, you actually bang on the pitch and kill the pace. And their ball lands like this.
most of the time not on the seam, slightly on the side, and it skid through. Kissing the surface. Kissing, yeah, skidding through. Even though on flatter pitches, these kind of bowlers can still be dangerous, skidding through into the stumps, and especially the Yorkers are very effective, and it helps more than the seam up bowlers. They have more chances of reversing the ball. Viv, did we know about this sort of stuff? I'll tell you something. Did anyone tell us about these sort of things, What these chance- tricks of the trade? What chances are we going to have when you have guys doing such? You know, they're special. And especially when you can come around the wicket and get the ball to straighten. How are you going to play that? Yes, not easily. No. But, okay, for the batsman, what do they learn by watching the hand? Sometimes you watch the hand and you still don't get it right. Because You know, so these guys are good. Most time you try and watch the wrist, and you spoke about maybe Shaheen. Yeah. He's also different because he's basically the snap of the wrist. yeah. You know, From here, yeah, then bang. this, bang. You know, Yeah. they all have their different styles. It's going to be difficult to play, Dave. Okay, well, we'll stay in here. It's much safer in here. Next man then to discuss, Adam Zampa. So, come back to Akib in a moment, but he's always been saying that the wrist spinners, the special spinners, are the people to watch. What do we think? या हम लेग स्पिनर्स की अब बात करें. आज राशिद खान की भी एक वीडियो देखी, वो बता रहे थे कि 5 से 6 डिफरेंट ग्रिप्स हैं उनकी बॉल करने की. जैम्पा की बॉलिंग के बारे में कुछ बताएं. जैम्पा का ये कि इनकी जो वेपन है उनके फ्लिपर है, जिस पे अगर स्ट्रैट्स देखे जाएं तकरीबन 6.13 का इनका स्ट्राइक रेट यहाँ पे इकॉनमी रेट है. गूगली पे भी 5.13. इसका मतलब है ये दो बॉल्स इनके बहुत ही इफेक्टिव है. रीड नहीं हो रही बैट्समैन को, चाहे वो राइट हैंडेड बैट्समैन हो, बैटर हो या लेफ्ट हैंड हो. अगर लेग स्पिन में देखते हैं लास्ट ईयर में 8.94, इसका मतलब कि ये लेग स्पिन इन्होंने थोड़ी कम करते हैं और मार बहुत लगती है उनको, इसलिए ज़्यादा ये फोकस है फ्लैट बॉल, फ्लिपर एंड गूगली पे. तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है T20 में ये. So he's saying that his stats for the googly and flipper are much better than his stats for a proper leg spin. Because he's not a big turner. You know, where he is good, varying his pace and staying in the stumps. And in Australia, is more successful because of the extra bounce. Even though pitches like Asian Asian pitches is not that effective, but still good enough. But in Australia, with bounce and skidders and sliders, it's very effective. हम वो पैकेज भी चलाते हैं. अजहर आप उसको डिस्क्राइब कर खेले उसके सकते हैं. साथ. मैं इसके साथ सिडनी टेलर पे खेला हूँ. So he's very improved bowler. मतलब जो है ना, I think one of the best bowler for Australia जो है ना. इसकी क्वालिटी ये है कि इसका जो मैं उस दिन भी बात कर रहा था ना, फ्लाइट पाथ अगर आप देखें इसका, वो इतना आसानी से आप इसको रीड नहीं कर सकते क्योंकि हाथ ऊपर इतना ज़्यादा नहीं जाता. तो ये वेरी करता है. सम बॉलर जो है ऊपर से बॉल छोड़ते हैं और ये जो है ना वेरी करता है, यहाँ से भी छोड़ता है और यहाँ से भी छोड़ता है. और जो इसका रोंगन है वो जो है ना थोड़ा ऊपर से छोड़ता है. और ज़्यादा होता नहीं, रीड नहीं होता. वो रीड नहीं होता. And he's not a big turner, so it's difficult to pick. But for instance, that first wicket, which was Asalanka, it was a little bit of a googly, and that sweep shot, instead of going out of the middle of the bat and maybe going down or going further, just a little bit of a top edge, top half of the bat, and you end up with the catch. So actually the googly, especially to the left-hander, and I thought also another point for all of us was that first couple of balls, Pereira was going for the reverse sweep. It looked like they were really going to try and go after him. Yeah. So then it's important to come back and you pick up the wicket and the game changes. Oh, definitely. That's why, you know, the leggies are always a wicket-taking option, you know, whenever they go. And because this guy is very clever. It's like a Shane Warne, you know, when you speak to him, sit down with him and, you know, he got plans and it's not easy. And he can bowl googly from up top here and from the side as well. So it's very difficult to pick him when you haven't faced him for a long time. Who would ever expect to see leg spinners at this particular level? Because as you know, in the olden days, you get 5 seam-up guys who will come and do it for you. But these are the most important individuals today in limited overs cricket, are the leggies, the guys who are filled with lots of tricks. Those are the ones who are going to get it done there.
Well, this is Aki's point. At your time, Abdul Qadir. Oh, as yeah, well. he was special. He was I seriously mean, look, special. if we look at comparing the teams who are struggling in this World Cup, this team haven't got mystery bowlers or leggies, wrist spinners. Like Bangladesh, they got none of the bowlers who can bowl leggies. There are no options. And West Indies. This young Sri Lankan team, why we hopeful? Because they have two good spinners. One is difficult to pick, and this is a proper leggy, and they've got two fast bowlers. So this team can merge. If you have, though they're young, but they have a quality. If you look at their batters, they go after you, and they're aggressive, and they have the talent to improve and take this team forward. And you said Mickey Arthur. Yes, Mickey Arthur did it with तो Pakistan. करता क्या? I mean, वो मिक्की की problem जो लोग कहते हैं, he came to Pakistan and tried to build a new team. He always have a problem with the senior players because he's the kind of individual who wants control. But I don't think so. अच्छा नहीं देखो ये from outside जो मुझे लगा बाहर से कि वो अभी भी वहाँ गया है तो उसने रिटायरमेंट दी वो क्या ऑलराउंडर जो उनका परेरा उसने स्टेटमेंट्स भी दी कि ये सारे बच्चे चाहते हैं लेकिन एंड में वो टीम बना लेते हैं अब ये जो टीम है ये अगर इसकी पिक्चर्स देखो और आगे 3 साल में देखो तो ये वो टीम है जैसे परेरा ओपन ग्लिम्पसेस ऑफ जयसूर्या आपके पास स्पिनर्स हैं तेज बॉलर्स हैं एक और इनको तेज बॉलर मिल जाए they are good to go anywhere in the world. Well, sure, I'm enjoying this because this multicultural society of ours in here is swapping sides like there's no tomorrow. And it's good the chairs have wheels. We can just keep going around in circles. No, and the points are good. I'm sure whatever you said was absolutely valid. All understand. Let's move on to batting though, because I mean, we'll come back to Australia later in the analysis. But the batting for Sri Lanka started so very positively. Yeah, I think definitely Pereira and Salanka उनके बारे में हम पैकेज भी चलाते हैं Pereira का राशिद भाई आप क्या देखना चाहते हैं इनकी बैटिंग कैसी Pereira को काफ़ी टाइम हो गया खेलते हुए लेकिन अच्छी फॉर्म में नहीं थे लेकिन यहाँ पे इनको बहुत अच्छा मौका मिला था लेकिन मिस कर गए 35 रन किए ये ऐसे प्लेयर हैं जो गेम को चेंज कर सकते हैं बिल्ड कर सकते हैं इनको किया इन्होंने और but obviously what they needed to was a win. Well, he's a very crucial player in the Sri Lankan team. I've seen him bat over the years, and every time that I've seen him, really, he's scored maybe something rather decent. It put his team in a very good position at times. If you notice, he's physically a strong-looking individual, and when he hits it, he stays hit. And what I'm so impressed about with some of the Sri Lankan batters, and you speak about the talent in the team, is the bat speed. You know, in order for you to generate power, you must have good bat speed. Especially with Pereira. Yeah, they're pretty good at that. So as you say, the future looks good, Javi. There's people like him you can continue to. After 10 overs, the ball behaving differently, the pitch behaving differently. You need to learn a bit more. And another thing, Zampa coming in and Mitchell Starc with the reversing, I think that was a challenge. Starc and that leggy, they actually changed the case. So they need to learn how to survive even a 1 over and then can put pressure on the other bowler. Because you have to understand that why Mitchell Starc is coming to bowl in the middle to take wickets. So time you give 1 over a respect to a bowler and then charge the other one will come next. What do we think of the other guy, Charat Asalanka? Young man coming through with some awesome shots. Well, as you say, if you can have a young team like this playing as well as they do now, but you can see the intention.
What do you guys think about this? श्रीलंका की ओवरऑल टेक्निक के बारे में और जो बॉलिंग लेंथ्स इनको की गई हैं इस मैच की उसके बारे में बताएं। आई थिंक अभी सर ने भी बात की जिस तरह जो है ना शॉट अप जैब जो है ना वो खेलता है, जैसे पुल शॉट जो है ना, और इनका हैंड स्पीड की बात की उन्होंने, दोनों बैट्समैनों की हैंड स्पीड और पिकिंग द लेंथ वेरी अर्ली। तो दोनों बैट्समैन अगर आप परेरा को देखें, इसको देखें, तो मिचेल स्टार्क को भी उन्होंने पुल मारा था, तो लेंथ बड़ी जल्दी पिक कर रहे हैं और पुल खेल रहे हैं। और एनीथिंग लेफ्ट हैंडर के लिए आपको होता है कि ज़रा सा वाइड उनको विथ मिलती है, द फेस ऑफ द बैट और पॉइंट के ऊपर से खेलते हैं। तो ही गॉट ऑल द शॉट इन हिज बुक, यू नो, लाइक देन डेफिनेटली जो हम बात कर रहे थे कि 35 किया, और जो आकिब भाई ने बात की कि देन हाउ यू गोना कन्वर्ट दिस 35 इनटू 50, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किस वक्त जो है ना आपने करना है। बिकॉज अगर T20 में अगर आप एक क्रूशल टाइम पे आप सेट होके विकेट गिर जाती है आपकी, तो नया बैट्समैन आके थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा। एंड स्पेशली एट मिडल पीरियड व्हेन स्पिनर इज बॉलिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द बैट्समैन टू कम इन एंड गेट द सेम रन रेट गोइंग। क्योंकि ओपनर्स की हमने बात की है कि वो ना सिर्फ तो अच्छे रन्स आके बनाते हैं, पर ज़रूरी ये भी होता है कि वो टीम के लिए टारगेट सेट करें पिच की कंडीशंस के मुकाबले में। तो उमर, आप बताएं, इस तरह के बैटर्स दोनों लेफ्ट हैंडर्स आपके सामने हो, क्या आपका क्या गेम प्लान होगा पावर प्ले के अंदर? पावर प्ले में तो यही था कि मैं तो स्टार्ट में करता, लेकिन बाद में जो हमारा कम्बिनेशन जिस तरह बना, हमने प्लान किया कि मैं पावर प्ले के बाद मोस्टली, लेकिन ओवरऑल मैं अपने स्ट्रेंथ पर रहता था, क्योंकि मुझे अपने स्ट्रेंथ का पता था। मैंने बहुत कम पावर प्ले में बॉलिंग की, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ती थी, जब ऊपर से जब रन्स पड़ते थे, तो हमेशा मैंने लेंथ पे और कोशिश करता था कि विकेट टू विकेट बॉल करूं, क्योंकि आपके पास चांसेस होता है कि आप अगर बैट्समैन मिस कर रहे तो यू गॉट 2-3 चांसेस एलबी के बॉल के चांसेस होते हैं। हमेशा अपने स्ट्रेंथ पे रहता था, यॉर्कर और बाउंसर में ज़रूर अटैम्प्ट करता था। ये सक्सेस थी मेरे पावर प्ले में। थैंक यू। Thank you, sir. How very polite, thank you. With these batting lineups in this tournament, one of the key phrases we hear is matchups. So the ability to match the right bowler to the right batsman, the ability maybe to switch left and right handers. How important do you reckon that is as this tournament goes on? Well, I take my hats off to the individual who decide they're going to switch it and all that sort of stuff, because when you look at maybe a Maxwell, you know, that's a shot that's been pretty effective for him over the years. And maybe this third ball that he would have faced today, he went around bang doing that. So that you must have a level of confidence in order for you to accomplish that. I can remember when I played, I hardly wanted to sweep, because I felt when sweeping, that's going to give an opportunity to the bowler. If I was going to go big, it's straight down the ground, long on or long off. But these guys, man, sometimes they take some chances, man. You have to be brave in order for you to accomplish that. But that's okay. But that's also a sort of testament to your ability and your strength. I mean, not just physical strength, or strength in terms of what's best for you. So if you're very good at hitting it straight down the ground, some of these grounds, of course, the dimensions change a bit. Sometimes the boundaries are shorter, so you have the temptation as well, which I've seen so many times when people look at a short boundary and think, I can clear that. And you don't quite get it, and it's the trap. The trap is the short boundary, whereas the longer boundary, you know you've really got to smack it. So that is why most times, you know, as a batter, regardless of whatever size may be smaller than the other, it's important that you try and play everything on its merit and try and take advantage of your strengths. And also try and put the bowler off. If you're the batsman trying to take command, and the example I mentioned was Pereira, who the first ball from Zampa was trying to switch away straight away. I mean, look, in 96 World Cup, I still remember in this region, who changes the mindset of 50 over cricket? Jay Surya and Jay Kaluutrana. Yeah. I mean, look, before that, most of the players just waiting for the bad ball. So if you're playing McGrath or somebody who's very accurate, then when you will start hitting. So here we come, you know, big shots, taking risk, but it was most of, you know, long on, mid wicket, extra cover. But afterwards, what next? The next day is like, you know, switch hit, reverse sweep. Nowadays, you need to do something, because as the time goes up, bowlers improve their skills, you know, slower ones, back of the hand, mystery bowlers.
And if you in a trap of any mystery ball, and if you don't know how to switch it or sweep or paddle sweep, you got no chance. But these two, especially the Mendes and Asalanka and Rajapaksha, the other day when they're playing against Bangladesh, at one point it was felt that they can't make it. But the way they attacked the bowlers, I think this is the next level approach, batting approach. So team needs to learn if you wanted to improve, have more mystery bowlers, leggies, wristy, Chinaman, and your batsmen need to learn. It's not that all the time this and waiting for the bad balls. But would it be fair to say that most of these shots that you see are predicted? Predicted, it's like premeditated. premeditated. This is the one that I'm going to go at, and to me sometimes that can be quite fatal. Yeah. Absolutely. Do you want to check with Rashid what new tricks there might be coming up? राशिद भाई, ये जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप है, हमने ऑस्ट्रेलिया की टीम के बारे में अभी हम पहली इनिंग्स के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो पाकिस्तान के साथ भी सेमीफाइनल में आ सकती है। जी जी, तो लग रहा है इसकी बॉलिंग लाइनअप हम इन्हीं को हरा के फाइनल में जाएंगे। तो क्या समझते हैं इनकी बॉलिंग बैटिंग लाइनअप का जो एक बैलेंस है, इसको कैसा रेट करें आप? देखिए, बैटिंग तो इनकी क्लिक कर सकती है, लेकिन बॉलिंग में थोड़ा सा एक जो बात की थी वीक लिंक है इसमें, वो स्टोइनिस बॉलिंग कर रहे हैं मैक्सवेल के साथ, 5th and 6th बॉलर, और कोई भी बड़ी टीम जब आएगी ना इसको यूटिलाइज की, इन्होंने भी आज यूटिलाइज किया, 51 रन किए इनके ऊपर। लेकिन जैम्पा भी अगर 20 रन और दिए होते तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती। जैम्पा क्रूशल रहे, बॉलिंग इनके ऊपर से बहुत ही अच्छी है। न्यू बॉल मिचेल स्टार्क करते हैं या साथ में हैजलवुड है, कमिंग्स है, तो ये बॉलिंग तो इनकी अच्छी है। लेकिन स्पिनिंग में देखते हैं एक ही बॉलर है जो कि वर्ल्ड क्लास बॉलर है, वो है जैम्पा। इनके पास कोई एस्टन एगर है, लेकिन वो प्लेइंग 11 में नहीं आ रहे। वो अगर आते हैं लाइक शमसी और महाराज, इस तरह के दो पेयर होने में, एक पेयर होना चाहिए जो कि स्पिन अटैक में यूएई में काम आ सकता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम 90% अगर देखा जाए तो स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, लेकिन जो वीक लिंक लग रहा है वो 5th and 6th बॉलर पे लग रहा है, जो कि हर कोई इसको अटैक करेगा यहाँ पे आके। वो अब किसकी जगह पे आ सकते हैं आपके ख्याल नहीं, में? इसी पे जाना पड़ेगा इनको। इसको स्टोइनिस को बॉलिंग कभी 2 ओवर 3 ओवर करेंगे, कभी मैक्सवेल अच्छी बॉल न्यू बॉल करेंगे, 2-3 ओवर इनके बन जाएंगे। अच्छा आशीष, एक थॉट है, अगर वो जो उनका लेफ्ट आर्म ऑप्शन है इन पिचेस के ऊपर, अगर मिच मार्श की जगह अगर वो उसको लेकर आए, आई डोंट थिंक सो। मिच मार्श जो है ना उनका मेन प्लेयर है, नॉर्मली वो नंबर 3 पे बैटिंग कर रहा था। आज मैचअप्स, डेविड टॉक अबाउट मैचअप्स के, उसको मैचअप की वजह से जो है ना मैक्सवेल को भेजा है कि उस वक्त स्पिनर बॉलिंग कर रहा था कि जाके रिवर्स स्वीप खेले, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको करेंगे। अगर स्टोनिस की बात करें ना, ये वीक लिंक है। मिच मार्श भी बॉलिंग करता है, ठीक है, आपके पास एक्स्ट्रा एक बॉलर भी आ गया, और स्टोनिस जो है ना वो डेप्थ ओवर बहुत अच्छे करता है, यॉर्कर वो बहुत अच्छे मारता है। हमने बिग बैश में भी देखा है, हमने आईपीएल में भी देखा है, वो अच्छी बॉलिंग करता है। आईपीएल में अच्छी बॉल की है इसने, पर स्पिनर पे स्ट्रगल कर रहा था मिच मार्श पिछले मैच में इतना। देखो, जो भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं ना जो यहाँ पे आए हैं, इनमें फिंच है जो यहाँ पे आईपीएल वगैरह खेले हैं, या डेविड वार्नर है, ये लोग खेले हुए। बाकी लोगों को जहाँ पे बॉल ग्रिप होगा तो ये लोग स्ट्रगल करेंगे, बट इनमें इतनी एबिलिटी और स्किल है। जैसे अरन फिंच की बात करें तो ही इज़ रियली स्ट्रॉन्ग प्लेयर, यू नो, डाउन द ग्राउंड, लेकिन वो स्वीप भी बड़ी अच्छी मारते हैं और निकल के जो मारता है, मतलब इज़ अ वर्ल्ड क्लास। लेकिन मेरा ख्याल है, दिस इज व्हाट आई फील, दैट इफ यू डोंट हैव अ प्रॉपर 2 spinners and you're playing in UAE, you might struggle. Why England looks better? Because they got 2 very good, very effective, and Livingston as well. So I don't know on these batting pitches, sort of batting pitches. Not Dubai and Abu Dhabi is not a big challenge for the batting, and you don't need somebody at bat number 8 and ball a bit. So why can't you have a proper 5 bowlers and then 7 batsmen? Why not? You know, Ashton Agar got a world record of 10th wicket partnership. You know, this guy can bat as well. You don't need 8 batsmen. I'm just saying I that. was quite happy about that, because England, as we were talking the other day, have all these bowlers who are having a good time at the moment. Yes. Moeen Ali, Rashid, they're all going well. And
they bat down to number 10 as well, because Rashid is there at number 10. So if you're looking for a side to beat, gentlemen, mind you, it's early days yet, I understand. England, It's yeah, England. very early days. He's yet. the one that says that Rashid has 10 first-class centuries. I said. And batting at what number? Number No, 10. no, number, yeah. Yeah. So he's That's batting really at number hard. 10, yeah. But That's I it. still have to see an Australian who doesn't know how to bat. I mean, generally, all their bowlers, even number 10, number 9. You haven't seen Rodney Yes, Hogg? Okay. What we'll do? I think Okay, let's start the search. We'll start the search. You can think of an answer. Come back after the break in whichever language you're loving this in. We'll be right back with you. Put your hand. Well, welcome back again to Game on Hay. We're still discussing the game today between Australia and Sri Lanka. Australia, comfortable winners. Now, these commercial breaks come at an awkward time sometimes. I had to sadly interrupt the great man that is Umar Gul on my left here when he had a very, very strong point to make. So let's go straight to the left wing and Umar Gul. yeah. Should I start from there? Yes, please. Yeah. उर्दू में बोलना है आपने. जी 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 हाँ, सॉरी जी वो आकिब भाई की बात को मैं थोड़ा सा और आगे करूँगा. जिस तरह हम बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि इनको 5th और 6th बॉलर को ऑस्ट्रेलियन को प्रॉब्लम हो रही है. तो अगर आप देखें ऑस्ट्रेलियन की मे बी स्टॉइनिस पे इन फ्यूचर जिस तरह के अगर ये शारजा जाते हैं या अबू धाबी पे, तो मे बी ये एक स्पिनर को ऐड कर सकते हैं जिस तरह उनका है एस्टन एगर आई थिंक, क्योंकि वो प्रॉपर बैटिंग भी कर रहा ऑलराउंडर है. तो अगर T20 में आपको देखें ना तो ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट 7 बैट्समैनों के साथ वो खेल लें. तो अगर T20 में आपके 6 बैट्समैन हो जाए, मैथ्यू वेड आपके 6वें नंबर पे आ जाए, एस्टन एगर अगर आपके 7वें नंबर पे आ जाए, तो आपका एक तो बॉलर ऐड हो जाता है डिफरेंट वेरिएशन के साथ, लेफ्ट आर्म स्पिनर हो जाते हैं, प्लस आपके 7 बैट्समैन हो गए और 4 आपके जर्मन वो हो गए बॉलर हो जाते हैं. तो आई थिंक ये एक कम्बिनेशन बन सकता है. मे बी इन फ्यूचर अगर टर्निंग पिचेज हो या जहाँ पे बॉल ग्रिप कर रहा हो, स्टॉइनिस की जगह ये लोग एगर का. एक और स्पिनर है, राइट आर्म लेग स्पिनर सिम्पसन है शायद, क्यों है ना? लेकिन आई थिंक अगर जाएंगे तो वो डिफरेंट वैरायटी के साथ, दो स्पिनर के साथ आई डोंट थिंक सो कि ये जाएंगे. और ये जस्टिन लैंगर का इंटरव्यू भी मैंने पढ़ रही थी उस दिन भी, कि वो यही बात कर रहे थे कि ये कोई फाइनल 11 नहीं है, हम कंडीशंस के साथ, ऑपोजिशन के साथ इसको चेंज करते रहे. आई थिंक दिस मॉर्निंग ये दूसरा उमर अगर आप देखो तो इफ यू लुक एट द स्कोर कार्ड्स, they are not 180, 90. Yes. It's like 150, maximum what we saw 170, 171 the other day. 72. Yep, yeah. Yeah. So what it indicates that it's difficult for the batters आखिर hits इसमें क्या hard है, and आखिर इसमें क्या है big shots. You look at West Indies struggling. So it's about it's a bowler's game more of a batsman. Low scorings. You can't compromise on your bowling. You have to have 5 effective 3 seamers, 2 proper spinners with Maxwell. So you need to have 6 options. इसमें अभी ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड की फर्स्ट बैटिंग शायद नहीं आई है. ये फर्स्ट बैटिंग में ये करेंगे रन्स. इनकी चेजिंग में शायद आई है अभी तक, जहाँ तक मुझे याद है. ये 2 टीम और दुबई में स्पेशली दुबई में. नहीं देखो ना कि शारजा's एवरेज स्कोर इज 135. Abu Dhabi's average score is 150. Same as Dubai. Yeah. So we were talking about average score. How many ESL we have played? I think There are hardly few times where teams scored 200 and that was Sharjah and 2 years back. Now the pitch is relayed and behaving differently. आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की जब आप बात करें ना, मैक्सवेल को वो एक किस्म का सेकंड स्पिनर ही खिलाते हैं. अगर आप उसकी आईपीएल में परफॉर्मेंस देखें, ही बॉल्ड रियली वेल इन आईपीएल. तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है कि उन्होंने अपना जो है ना एस्टन छठा नहीं है ना, अगर कुछ आज ऐसे हो गया. नहीं देखे ना, नहीं स्पिनर नहीं है, लेकिन उसके बाद उनके पास बॉलिंग में डेप्थ तो है ना. मिच मार्श भी है, स्टोनस भी है, लेकिन वो इन पिचेस पे सीमर वो उनके पास अच्छा है. अगर आपके पास एक स्पिन ऑप्शन हो जाएगी तो अच्छी हो. That's more useful than having a seaming all-rounder. Okay, this discussion could go a long time. Okay. Shall we talk about Australia's batting? Because the feeling I got today was that they're a side gaining confidence, and they will gain a lot of confidence from the fact that these 2 guys who were out of the runs in the first game have got runs today. And I mean, they're 2 very familiar names, in Warner and Finch. It's a worrying sign, I guess, for the other folks, who are involved in this T20 tournament, because it's not always the time that you hit the mark running
scoring runs and getting all the wickets that can be mustered, that's going to make you or give you the best opportunity for you to win the T20 World Cup. It's the individuals, the teams that work their way into fine form at the right moment. That's also important. Sometimes we can peak too early. But the way Australia is going at present, David, it looks unanimous for the other teams. Well, I mean, they did it today for, what, 3 wickets down. We just have a look at the wickets quickly, see how they did go down, which includes, of course, Warner, Finch and Maxwell. First of all, the Finch drag on. I mean, that's always a painful one for any batsman. It got going nicely. He obviously wanted to make the most of it. But 37 from 23, I mean, that's a brisk and positive innings. Yeah, I mean, look, the key was like David Warner coming back. He is the most dangerous T20 batsman. If he gets going, Australia would be unstoppable. He's the key, and of course, Aaron Finch. He's a quality batsman, lesser riskier than Warner, more consistent. So they have a very good opening partnership. And they bat deep as well. Yeah. You look at maybe a Mitchell Starc. He's got a double 100 to his name, is it? Also 100 in Test match cricket. So, which means that these teams can bat. Do we trust you on that? I may be wrong, but you can do some research. You're not thinking of Gillespie, are you? You did get a It double could 100. be Gillespie. That's the one. Yeah. So if you're thinking, okay, Thank you so much, man. that's a pleasure. I mean, that's right. But I think Mr. Stark's got 100. 99 runs. Yeah. 99. I think, yeah. Did he? Pat Where's Cummins. the other one? That was very close. Yeah. Okay. 99, Okay. 100, I think one you got. run. I think Only 1 run Yeah, short. that's not But good. I think Pat I'm going to back Cummins. myself and say, Mitchell Stark, he's up there. I think he's got a ton somewhere. Maybe it's just around the corner. Could but be, could be. Not in the next couple of weeks, I suspect, where he bats in this Australian. I don't know if we have any more wickets to show you. That was part of the plan, I thought, was to show the 3 wickets that went down. If we do, we will. If we don't, we won't. Maxwell, of course, I'm going to come back to the 2 batsmen, the 2 main batsmen. Maxwell is one of those potential game changers, but who seems to threaten, as he did today, come in, hit one big shot, and then gets out. You know, he's a very utility player. Most of the time they use him as a new ball bowler, and then he's a floater. They can send him number 3. I think he must be batting in every number so far. Number 7, 5, 3, and he's the one, I think, bring those shots in Australian lineup. Reversing, switch hitting, always difficult for a bowler to plan. You can't plan against Maxwell because he dictates his terms. That's why he's so I think he's different he's an enigma at times because you're never quite sure what you're going to get yes from him, and that's what I think is rather unusual. So I think maybe not just he surprises the opponents, but himself as well at times. That's a very fair comment. That's a fair comment. And opening partnership ऑस्ट्रेलिया की 70 रन्स की रही है और वार्नर काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे. श्रीलंका वापस फॉर्म में ले आया, एक कैच ड्रॉप किया है. अब कितना खतरनाक है ये दूसरी टीम्स के लिए. इनकी बैटिंग का भी पैकेज देखते हैं साथ साथ. आप बताएं इनकी बैटिंग के. मेरे ख्याल से ये बेस्ट ओपनर्स हैं इस वक्त इस वर्ल्ड कप में, जो कि स्ट्राइक रेट देखें या 6 ओवर में पावर प्ले में इनकी बैटिंग देखें तो अराउंड 70 रन या 60 रन किए हैं इन्होंने इस मैच में. और वार्नर, फिंच और इसमें 3 प्रॉपर प्योर बैट्समैन हैं, बाकी सारे ऑलराउंडर्स हैं. मैक्सवेल का क्या इन्होंने रोल डिफाइन किए हुए हैं सबके कि ऊपर से रन भी कर रहे हैं और विकेट भी थ्रो, ये प्रॉपर हिटिंग करते हैं. फिर इसमें ऐसा प्लेयर है जो कि अराउंड पूरी टीम खेलती है. मैक्सवेल को एक रोल दिया हुआ है कि तुम्हें हिटिंग करनी है, जाके स्विच हिटिंग करें. यहाँ पे जो हमारी मैनेजमेंट होती है रोकती है, वहाँ इसको फ्री हैंड दिया हुआ है, चाहे 0 करो या 15 रन करो, लेकिन मिनिमम बॉल में करो. मिचेल मार्श जो है वो भी इसी तरह का प्लेयर है, लेकिन वो प्रॉपर बैटिंग करता है, इसलिए टॉप ऑफ द ऑर्डर किया हुआ है. लेकिन मोस्टली जो प्लेयर्स हैं बैटिंग ऑर्डर में देखें सबको रोल डिफाइन किया हुआ है इन्होंने. इसी वजह से ये टीम इंग्लैंड की तरह फेवरेट लग रही है, लेकिन मुझे लगता है फाइनल पाकिस्तान और इंडिया का ही होगा. चले इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए तो खूब दुआएं. अजहर, आप बहुत बात करते हैं प्लेयर्स को बैक करने की,
وارنر اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے, پیچھے بھی کچھ عرصے میں رنز نہیں کیے ہوئے تھے. اس اوور آل آسٹریلین لائن اپ کے بارے میں اب ان کا پرفارم کرنا کتنا امپورٹنٹ ہوگا آنے والے میچز کے لیے؟ اگر آپ ریسنٹلی ان کی فارم دیکھیں, ڈیوڈ وارنر کی اور ارن فنچ کی یہ فارم میں نہیں تھے, انہوں نے کافی عرصے سے رنز نہیں کیے ہوئے تھے. آئی تھنک دس از اے گڈ سائن فار آسٹریلیا کہ انہوں نے رنز کیے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جب آپ بیکنگ کی بات کرتا ہوں تو یہ پلیئر ایسے ہیں, کیونکہ آسٹریلین ٹیم جو ہے نا اگر دیکھیں تو وہ اپنے پلیئرس کو پراپر چانس دیتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ڈیوڈ وارنر نے 100 کیا اور ان کی جو ہے نا مسز جو ہے پریگننٹ تھی, بیبی ہوا, تو مچ مارش اس کی جگہ ٹیم میں آیا, اس نے آ کے 100 کیا. تو تیسرے ٹیسٹ میچ میں انہوں نے دوبارہ ڈیوڈ وارنر کو کھلایا اور مچ مارش کو باہر بٹھایا. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ 4 نمبر پہ جس نے رن نہیں کیے تو مچ مارش کو وہاں کھلا دو, اس کو اوپن کروا دو. تو وہ اپنے اسپیشلسٹ, ان کو پتہ ہے کہ دیز 2 گائز آر اوپنر, تو تیسرا اوپنر ان کے پاس ہوگا, تو وہ اگر ان میں سے کوئی انفٹ ہوگا, نہیں کھیلے گا, تو پھر ہوگا. اور ارن فنچ کی میرے ساتھ اس نے ڈریسنگ روم بھی شیئر کیا ہوا, میں نے اس کی اننگز بھی دیکھی ہیں. دس گائے کین ہٹ دا بال, اور اس کے پاس سارے شاٹ ہیں. وہ آپ ذرا سا اس کو باہر کریں تو کٹ اچھی مارتا ہے, ٹھیک ہے, پل اچھی مارتا ہے, اور سامنے جو ہے نا ڈاؤن دا گراؤنڈ وہ بہت اچھا اگینسٹ فاسٹ بالر اور اسپنر. آج بھی ہم نے دیکھا 148 پہ وہ نکل کے اس نے ایک آن ڈرائیو ماری اس کو, جو باؤنڈری ہوئی. تو ایک کوالٹی سائڈ ہے. اس کے بعد اسٹیو اسمتھ اور ایک آسٹریلیا کے. ایک سوال اس میں یہ ہے کہ اگر یہ دونوں اوپر سے آؤٹ ہوتے ہیں, کیا یہ ٹیم سروائیو کر سکتی ہے 20 اوورس؟ وائی ناٹ, پوچھ رہا ہوں سوال, وائی ناٹ کیا they can bat deep, you know, ہٹ مارتے ہیں سارے اس میں سے, اس کے بعد تمام پاور ہٹرز ہیں. نہیں, اسمتھ ان کا کی مین جو ہے نا, جیسے جو روٹ جب T20 میں تھا تو جو روٹ اس کے گرد کھیلتے ہیں. باقی سارے پلیئر ہیں, روٹیشن آف اسٹرائک ان کی بہت اچھی ہے. جو ہے نا مچ مارش ایک جو ہے نا اس کنڈیشن میں جب وہ پاکستان کے خلاف بھی کھیلے تو وہ پھنسے ہیں, وہ اندر آتا ہوا گیند وکٹوں میں بال ہوتا ہے تو ان کو پرابلم ہوتی ہے. باقی جتنے بھی پلیئر ہیں یہ ان کے پاس اتنے شاٹس ہیں اور روٹیشن آف اسٹرائک جو کرتے ہیں نا, اس میں آئی تھنک کہ بڑی اسٹرانگ ٹیم. اوور 118 رن ساؤتھ افریقہ نے جب کیے ہیں اس وقت, کیونکہ ڈیوڈ وارنر رنز نہیں کر سکے, ایرن فنچ نے بھی کوئی زیادہ رن نہیں کیے, تو جو راشد بھائی نے ابھی بات کی کہ یہ اسٹرگل 20 اوور میں کیا ہے, پر آج جب ڈیوڈ وارنر نے رنز کیے ہیں تو آپ دیکھیں بڑا کمفرٹیبلی, تو کتنا امپورٹنٹ امپیکٹ ہے ابھی یہ اوپنرز کا ان کے لیے جو رنز کر رہے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ بیفور دس میچ ہر بندہ بات کر رہا تھا آسٹریلین کی پرفارمنس کے بارے میں کہ ان کی T20 کی پرفارمنس کیا ہے. ہر بندہ کرٹیسائز کر رہا تھا لاسٹ 1 سال سے نا کہ ان کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے. لیکن آج جس طرح وہ لوگ کھیلے اور جس طرح انہوں نے پرفارم کیا تو وہ لگ رہا تھا کہ آسٹریلین کی ٹیم ہے, آسٹریلیا کی ٹیم لگ رہی تھی. بالکل ان کو ایک بوسٹ ملا انہوں نے, بلکہ ایک اچھا پچ ان کو ملا ہے. آؤٹ آف فارم تھے, اس اپرچونیٹی کو اویل کیا, ان کا کانفیڈنس واپس آ گیا. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ آپ کی جو ڈگ آؤٹ میں اور ڈریسنگ روم میں جو لوگ بیٹھے ہوئے نا, وہ ڈریسنگ روم کو کس طرح رکھتے ہیں, کس طرح آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جو ٹیم مینجمنٹ ہے وہ آپ کو برے ٹائم پہ سپورٹ کرے, اور جو پلیئر کو جو سپورٹ چاہیے اس ٹائم پہ انہوں نے سپورٹ کیا, اور بالکل لائک کی پلیئر ہے وہ. لیکن آئی تھنک کافی ان کو کانفیڈنس ملا ہوگا آج کی پرفارمنس پہ, جس طرح ان کے اسٹرائک ریٹ تھا اور جس طرح انہوں نے میچ لے کے گئے. آئی تھنک اٹس گڈ سائن فار آسٹریلیا ٹیم. And the openers have performed. Where we are going to the Finch batting package. What would you like to say about that? Well, he's a powerful guy, and we haven't seen him do the stuff which we know he is accustomed to over the years. I think he has lost form for quite some time, but he's an individual that when he gets going, he's no better striker of a cricket ball, and he hits it long. Well, it looks to me, Viv, that both these guys found their memories today, because they've both been out of form. They found their memories, and if you watch today's game alone, you wouldn't believe they'd been out of form, would you? That's a good shot. Yeah. Look at that, straight down the ground, bang. That's what we know Finch is accustomed to. And do you know what, this story I've been reading, that they've been practicing on concrete pitches. So they've given up the nets, given up the turf, they've gone to concrete pitches, which reminds me of what we used to do in the Caribbean, but for different reasons. We used to have concrete pitches, the same bowling machine at about 16 yards, and aiming round here. I'm assuming they're just trying to get bat on ball and trying to get the feel of things flowing again. Well, when do you use that practice for you to start getting the ball to move sideways? It's pretty difficult on concrete, isn't it? Because concrete is pretty straight. I knew what you guys were practicing in terms of the chin music that you guys
just about here. Yeah, you're trying to get Yeah, accustomed to that stuff yeah. and get all the necessary Yeah. practice Yeah. in order for you to accomplish. But okay, right. But here's the thought. As a coach, and I'm a great believer in this. If the pitches in the nets are not up to scratch, then it's wasted time. Which is why actually another story in the Caribbean in 1986. It was when I was captain of England. I invented something called optional nets, which was a way of saying the nets are rubbish in Barbados. I don't want to go into a net. If you don't want to go into a net, you don't have to. But to me, it's a valid point. If the nets aren't good, you've got to find some way of getting good practice. And what it's done for these two, obviously, is re-establish their confidence and get them going. You know, mostly your net's quality would be the pitch in the middle, similar. So if you're struggling at the middle and you go back in the same condition, you won't get your confidence back. So that's why you go and see where you can hit few balls, feel that ball is hitting the middle, and it's all about clearing your doubts. I can do that. Yes, it's coming nicely on the bat. So that's why they went and feel some sound, hitting the ball, giving the memory. Yes, I'm the same batsman who scored 200. I can maybe draw a point here. If you know, in baseball, when you see the guys who are looking to bat next in the bullpen, it isn't about a guy coming as fast as possible at him. They're giving him enough pitches in order for him to get his eye in. It's all about the batter then, not the pitcher. And that to me is, you speak about maybe the nets in Barbados, and I must admit they weren't the best. But at the end of the day, it's all about you as a batter trying to get the necessary shots that when you get in the middle, that you would like to accomplish. You get a guy to good throw down. I've always liked a guy, good throw down. I'm going to do that. I'm going to cut. I'm going to hit it in the V. And that to me gives you all the necessary practice that you, as you say, you're comfortable here, you're going to be okay in the middle. Just out of interest, Vivi, with that same scenario, Barbados or wherever, and you've got, in your own bowling camp, you've got Holding, Marshall, Roberts, Croft, and a couple of young guys who are not in the team but want to impress the captain of West Indies. Well, do you have a net, or do you say... I'm not a net. I wasn't a net man. Because as I said, I followed this whole philosophy about the baseball hitter, and I wanted to obviously introduce that into my style. It's about maybe always make sure that you have a good throw-down guy. And you dictate to him where you want those throws to go. So you get the arms moving, you do a little bit of pulling, you do a little bit of cutting, you get on the front foot, you're on the back foot, and that to me, as you say, just clears the net. You don't want to be in the nets, because as you say, some nets can be rather dangerous. And you don't want to know you're out of nick and you're going into the nets, and for some reason you'll be further out of nick after the nets. Well, one comment on this. Your friend Javed Miandar introduced a marble slab. Whenever you go, Pakistan team still carrying 2-3 marble slabs because whenever the quality pitches are not allowed, you can use that, and it's still working for the people. Umar, did they allow you to bat with the marble slab? I mean, did they give you special dispensation to allow you to work on your batting in the same way? I would love to bat on that slab, but I couldn't find the chance. So anyway, well, let's ask you, as the premier batsman on this team here, what your preparation was before a game. Preparation before, I always believe on quality. Not on quantity. So nice. Just one ball is enough. Short, sweet and smart. जिस तरह सर विव ने कहा ना कि आपकी सारी वो कॉन्फिडेंस की बात है कि ना कि हम मेंटली कितने सेटिस्फाइड होते हो, मैं सबसे बड़ी मिसाल दूंगा इंजी भाई की। वो हार्डली जहाँ पे उनको लगा कि यार नेट इस तरह के नहीं है कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, वो नेट से निकलते थे और हार्डली 10 से 15 में वो नॉकिंग करते थे, लेकिन उनका जो पर्पस था वो करते थे, जो मैच के प्रिपरेशन थे। मैंने कभी उनको ज़्यादा वो जिस तरह थ्रो डाउन करते हैं ना बाकी बैट्समैन, मैंने उनको नहीं देखा। वो होते थे 5-10 मिनट की वो नॉकिंग करके जो पर्पस था मैच के लिए वो करके फिर चले जाते थे। लेकिन वही बात कि आप मेंटली और यहाँ से आप कितने सेटिस्फाइड हो, इनर सेटिस्फैक्शन आपको चाहिए। अगर मैं इसी चीज़ को बॉलिंग में लेके आऊँ अजहर भाई, कि हम देखते हैं कभी कभी जब बॉलर्स भी आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो उनको
لے جاتے ہیں کوچز ٹارگٹ بولنگ کے لیے, اس میں اور یہ جو ہم بات کریں اس میں, اس کو کیسے آپ لنک کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بیٹنگ کا جو ہے نا, ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو بلے سے بال نکلتا ہے جب آپ بیٹنگ کرتے ہو, ناکنگ کرتے ہو, تو آپ کی فیل ہے کہ آپ ڈرائیو مار رہے ہو, تو آپ کا ہیڈ ٹورڈز دا بال تھا, آپ نے ڈرائیو ماری ہے, ٹھیک ہے, پل ہے تو آپ واچنگ دا بال, اور پل آپ کیا کر رہے ہو, اونچا مار رہے ہو, نیچا مار رہے ہو. ایسے ہی بالنگ کا بھی ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے بالنگ میں آپ کو کیا پرابلم ہو رہی ہے. سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ردم نہیں آ رہا, آپ پراپر رن نہیں کر رہے. سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کا بال کا جو آپ ریلیز پوائنٹ ہے, آپ کے بال سے جو ریلیز ہے بال کی, وہ ٹھیک نہیں ہے. تو وہ بالر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا چاہ رہا ہے. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں میچ سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے میں ایک سٹمپ لگا کے